Hello students, in previous video we have completed the revision of chapter 11 and now today we will start the revision of last chapter which is left for the revision, that is chapter 12, observing the sky. So in this we have learned about the different objects that we can see in the sky during daytime and nighttime. So here first of all we will revise the daytime sky. So during daytime the sun dominates the sky, right? So we can see the sun during the daytime and the sun dominates the daytime sky with its brightness, and during the day the sun appears to move through the sky and it appears to rise in the east and sets in the west. So हमें ये appear होता है move करता हुआ, and it moves from east to west, and but actually sun does not move. The thing that move is your earth. So this apparent motion of the sun for us is because of the rotation of earth on its axis from west to east. Very important point. जो हमारी अर्थ है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जिसकी वजह से हमें जो सन है वो अपीयर होता है मूव करता हुआ ईस्ट टू वेस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो ये डायरेक्शन आपको लर्न होनी चाहिए कि अर्थ रोटेट कौन सी डायरेक्शन में करती है, वेस्ट टू ईस्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन जो हमें सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट. तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. And we can also sometimes see some planets like Mercury and Venus during early morning hours. And these planets have therefore been named as morning and evening stars. And they are seen very low near the horizon in the sky. So कहाँ ये दिखते हैं? Very low near the horizon in the sky. Next is nighttime sky. So we all know that moon appears as the brightest and the most recognizable object in the sky at night. So moon हमको दिखता है mainly, सबसे brightest जो चीज़ है that is moon, which appears in the night sky. And in addition to moon, stars and planets are the other celestial bodies that can be seen in the night sky. So ये आपके stars और planets भी हमको नजर आते हैं नाइट स्काई में. एंड वी हैव लर्नड अ लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर, एंड द प्लैनेट वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जो प्लैनेट वीनस है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर द सन एंड द मून. सन एंड मून के बाद जो हमें ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है स्काई में, दैट इज योर Venus. And we know that Venus is the brightest and the hottest planet of our solar system. And Venus is not the only planet we see in the night sky. Mars, Jupiter, and Saturn are the other planets that can be seen in the night sky even with unaided eye. And now about the stars. So we all know that there are very large number of stars in our sky, and these are huge spheres of hot gases having light of their own. So we all know that stars have their own light. They are luminous objects, and it is interesting to note that and realize that the sun is also a star. Sun भी क्या है? Star है, and it is the star nearest to the earth. And due to this reason it appears to be big as compared to other stars. दूसरे stars के comparison में ये हमको बड़ा नजर आता है ना. It may come to be a surprise to you, but its brightness is less than that of many stars. बहुत stars इसकी brightness कम है, and we now know that our sun is a star of average brightness. Average brightness उसकी है, and almost all the stars are millions of times far away from us as compared to the distance of the sun from us. It is the reason
that the sun appears like a ball to us, but the other stars appears only as a points or dots. So ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से बाकी स्टार्स हमको छोटे नज़र आते हैं, बट जो सन है उसका डिस्टेंस बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में कम है, और जिसकी वजह से वो हमको बॉल की तरह नज़र आता है. एंड स्टार्स अपीयर्स एज डिम और पॉइंट इन द नाइट स्काई. दिस इज ड्यू टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्योंकि हमें दूर की चीज़ें छोटी नज़र आती है, तो ये बहुत दूर है हमसे. एंड दे डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग डे टाइम. ये डे टाइम में डिसअपियर नहीं होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई ऑल द टाइम, बट दे आर नॉट विजिबल ड्यू टू सन्स ब्राइटनेस ड्यूरिंग डे टाइम. एंड डे टाइम में वो सन की ब्राइटनेस की वजह से नज़र नहीं आते. नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टेलेशन. So what is a constellation? A group of stars. Constellation is a group of stars that appears to form some recognizable pattern or shape in the sky. And this is the answer of one question also. What is a constellation? A constellation is a group of stars. ये ग्रुप होता है स्टार्स का जो हमको कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न या शेप बनाता हुआ नजर आता है, वो स्टार्स. So, a constellation is a group of stars that appears to form recognizable pattern or shape in the sky. And we can see many constellations in the sky. And one of the most important constellation which we can see during spring in the early part of the night is the Ursa Major. And this is also known as Great Bear, and the two stars at the top of the constellation are called pointers. और जो आपके two stars हैं टॉप में उसे हम pointer भी बोलते हैं. And why these are called the pointer? Because the line joining those points is in the direction of the special star called the pole star. And we have learned about the pole star. It is also called Dhruv Tara. And some other easily recognizable constellations are Orion, visible in winter. So ये आपको seasons पता होना चाहिए कौन सा कब visible होता है. Ursa Minor और Small Dipper visible in spring, and Cassiopeia visible in autumn. So ये आपको seasons learn होने चाहिए कौन से season में कौन सा आपको नजर आता है. Next is your pole star. So pole star is a special star in the northern hemisphere. ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का स्पेशल स्टार है. Why it is special? Because unlike other stars, it appears to remain fixed at one place. बाकी स्टार्स की तरह ये मूव करता हुआ नजर नहीं आता, ये फिक्स्ड रहता है वन प्लेस में. एंड रीजन बिहाइंड इट इज दैट इट लाइज along the axis of rotation of Earth. ये हमारे axis of rotation के ऊपर लाई करता है. Here is the pole star. So it remains fixed, appears to remain fixed at one place. And because of this special feature, this star has been useful to travelers. Travelers के लिए बहुत useful है because it defines the north direction. ये travelers को north direction define करता है. Next is identifying the planets in the sky. हम कैसे identify कर सकते हैं planets को स्काई में? बिकॉज स्काई में स्टार्स भी होते हैं, तो हमें उनको पता होना चाहिए कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा स्टार है और कौन सा प्लैनेट है. सो प्लैनेट इज क्लोजर टू अस देन द स्टार्स. That is why planets appears like a tiny disk, whereas stars appears as points. तो स्टार हमेशा पॉइंट की तरह नजर आते हैं और ये डिस्क की तरह नजर आते हैं. Stars appears to twinkle. Star twinkle करते हैं. Planets do not twinkle. Stars do not appear to change their relative position with respect with each other in the night sky. Stars जो है वो अपने जो उनकी पोजीशन होती है वो एक दूसरे के साथ चेंज नहीं होती. And they appears to be most stationary. However, planets change their relative position with respect to each other.
बट प्लैनेट्स जो है वो अपनी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज करता रहता है, मूव करता रहता है. दे अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेशनरी स्टार्स. तो वो मूव करता हुआ हमें नजर आता है. एंड this was the reason why ancient people named them as planets, that is wandering star. So you must know that planets are sometimes also called wandering stars. And next is your changing night sky. So stars do not appear to move with respect to each other in the sky. However, if one closely observes some stars for an hour or so, it will be found that there is a slight shift in the position of these stars in the sky. तो स्टार्स जो होते हैं वो एक दूसरे की जो रिलेटिव पोजीशंस होते हैं वो उनकी चेंज नहीं होती है. बट अगर हम उनको काफी देर तक ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल फाउंड दैट दे स्लाइटली शिफ्ट इन द पोजीशन. So there is a slight shift in the position of these stars in the sky. And stars like the sun appears to move from east to west. And you know the reason why? Because stars are not moving objects. They are stationary. But they appears to move from east to west. Why? Because अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वही रीजन है जो सन के लिए हमें रीजन दिया था कि सन क्यों हमें मूव करता हुआ नजर आता है ईस्ट टू वेस्ट. बिकॉज अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज द सेम रीजन बिहाइंड दिस ऑल्सो. सो in next video we will revise the exercise and question answers of this chapter. Thank you.